So now we will do one of the example related to the F distribution. Let x1, x2, xn be a random sample from the normal distribution having the mean 0 and variance 1. Now define, हमने एक define variable define किया. It is the sum of the all random values divided by k. That is, this is the sample mean, right? For k values. And this is the sample. This is also a sample mean for it is going from the k is running k plus 1 to n xi upon 1 upon n k running from just wait. Yes, it is summation I running from k plus 1 to n divided by n minus k. ठीक है जी. सम ऑफ k plus 1 से लेके n तक जो वैल्यूज है उनको सम अप किया. नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन दोनों वेरिएबल्स का सम डिवाइडेड बाय 2. वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी? अगर हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ले लेते हैं with their respective number of observations multiplied with it, then what is the value, right? And what is the ratio of the square of these two variables, and what is the ratio of these two simple variables x1 and x2, right? So let's start. Since x1, x2, xn is a random sample from normal distribution, then we know that the sum of all the variables, this follows normal distribution with mean 0 and having the variance 1 by k. And x bar n minus k, this also follows normal distribution with mean 0 and variance or sigma is equal to 1 by n minus k. Now x1, x2, xk and xk plus k plus 1 से लेके xn तक all independent variables. It implies xk bar and xnk n minus k bar are also independent, right? Now we will take their sum. हमने इनका sum लिखा, and we have the property of normal distribution. If two variables are normally distributed, then their sum is also normally distributed with mean mu1 plus mu2 and variance. जितना variance है वो भी add हो जाएगा, जितना mean है वो भी add हो जाएगा. ठीक है जी. So similarly here, so this and this are normally distributed. Their sum follows mean 0 ही रहेगा. और वेरिएंस में क्या होगा, 1/2 का 1/2 स्क्वायर, दैट्स व्हाई हियर इज 1/4k और यहाँ आ जाएगा 1/4 n minus k. Therefore, the sum follows normal distribution with mean 0 and variance n upon 4k into n minus k, right? Now we will do the B part. बी पार्ट में क्या प्रूव करना है कि जब हम इनका स्क्वायर करके इनको इनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके सम लेते हैं तो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा. नाउ दिस एक्स के बार माइनस 0, यहाँ पे माइनस आप लगा सकते हैं, माइनस 0 अपॉन 1 बाय अंडर रूट के. ठीक है जी, क्योंकि आपका वेरिएंस क्या है 1 बाय के, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा आपका अंडर रूट 1 बाय के. दिस फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट कर दिया. सिमिलरली दिस इज आल्सो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हैविंग मीन 0 एंड वेरिएंस यहाँ पे कितना था. स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कैसे बनता है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. तो ये वेरिएंस हमने अंडर रूट में लिख दिया. ठीक है जी. तो देयरफॉर अब k जो है इसका स्क्वायर करेंगे. अब आपको पता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जब स्क्वायर किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, बन जाता है काई स्क्वायर वेरिएट. अगर एक का करेंगे तो विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. हमने इसका स्क्वायर किया, एक ऊपर चला, के ऊपर चला गया. ठीक है, इन डिनोमिनेटर इट विल कम इन द न्यूमरेटर. सो दिस फॉलोज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सिमिलरली यहाँ भी स्क्वायर किया, एन माइनस के जो है वो आपका न्यूमरेटर में जाएगा. दिस फॉलोज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. राइट, अब हमने क्या करना है, इनको आपस में सम करना है. और सम करने से पहले these two are chi-square variate and sum of chi-square variate is a chi-square variate और इनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो ऐड आ. तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया. So are independent. So by additive property of chi-square distribution, their sum follows chi-square distribution with 2 degrees of freedom. Now
the third we want to find their ratios. Since x1 follows n01, x2 follows n01, they are independent, and they are the squares are the chi-square variates with 1 degrees of freedom, and their ratio, and the ratio is definitely a f is a f distribution having the degrees of freedom 1 and 1, क्योंकि ये देखो काइस के पीरियड को उनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद degrees of freedom 1 and 1. And we know that x1 by x2, they are both are the normal variate, and the ratio of two normal with independent normal variate is a standard G variate. So this is a very important example of F distribution in which we have used that if x1, x2, xn are random sample from normal distribution, and we have defined two kinds of means. One is xk bar, other is xnk minus 1. Then how to find the distribution of these all. So this is all about today's lecture. I hope the point is clear.